डिस्कसन करवा जियोग्राफी क्वेश्चन। प्रथम क्वेश्चन करेक्ट आंसर कौन हम? वेयर इज नागपहाड़ माउंटेन सिचुएटेड इन राजस्थान? नागपहाड़ माउंटेन राजस्थान क्यों जगह सिचुएटेड? सिरोही, चित्तौड़गढ़, आजमर, करेक्ट आंसर कौन हम? आजमर, जयसलमर। ये कोई पारिबा करेक्ट आंसर? वेयर इज नागपहाड़ माउंटेन सिचुएटेड इन राजस्थान? करेक्ट आंसर यार आजमर हम। नागपहाड़ जोड़ा द नाग माउंटेन इन द आरावली माउंटेन रेंज इज लोकेटेड इन आजमर है। आरावली इज ए माउंटेन रेंज लोकेटेड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, Rajasthan. Aravalli is the oldest mountain in the geographical structure of India. It is the oldest mountain range in the world, which divides Rajasthan from north to south in two parts. The highest mountain peak of Aravalli is Guru Shikhar, जोटा कि होची 722 मीटर in the Sirohi district, which is Mount Abu. Nagpahar separate Pushkar from Ajmer city. Next question: where are the Bhorat प्लेटो लोकेटेड? भोरात प्लेटो कौ जगह देखा जाए? जयसालमर, उदयपुर, जोधपुर, अलवार। करेक्ट आंसर कौन हम? वेयर आर द भोरात प्लेटो लोकेटेड? भोरात प्लेटो तुम कौ जगह देखा जाए? वेयर आर द भोरात प्लेटो लोकेटेड? जयसालमर, उदयपुर, जोधपुर, अलवार। करेक्ट आंसर जो देखा उदयपुर। करेक्ट आंसर कौन हम? उदयपुर हम करेक्ट आंसर। भोरात प्लेटो with an average elevation of 1225 meter lies northwest of Udaipur between Kumbhavalgarh and Gurgaon, जोटा हूँ गुगुंडाज। भारत प्लेटो इज ए प्लेटो comprising the northern part of the central highland, central India, extending over about 22,000 square miles and including most of the northwestern Madhya Pradesh state and central Rajasthan. Additional information देखिए south eastern plateau or Hadoti plateau. The south eastern part of Rajasthan once governed by the Hedda kings, and hence the plateau in this region is known as the southeastern plateau or the plateau of Hadoti बोली कहा जाए. It is spread on 7% land of Rajasthan. The soil on this plateau is very fertile. It is spread on 7% land of Rajasthan. The soil on this plateau is very fertile. The other plateau of Rajasthan are Udia, Abu, Bhorat, Mesa, Upper Mal, Lasadia. Next question: Konkan coast is stretched from dash? Konkan coast जो रही सेटा कौ जगार स्ट्रेच रही? गोवा टू कच्ची, गोवा टू दीव, केरल टू आंध्र, गोवा टू मुंबई। Konkan coast is stretched from correct answer Goa to Diu. Konkan coast is a 720 km along 20 km long coastline that forms and is a rugged section of the western coastline of India. It lies between the Western Ghat and the Arabian Sea and extend from the Daman, जोटा कि गंगा river to Terkhul river between Maharashtra and Karnataka. Konkan is bounded by the Arabian Sea to the west, the Deccan Plateau to the east. The Konkan coast proceeds from the north at Daman in the Gulf of Khambat, extends southwards all along with the western seaside
areas of Maharashtra and Goa and meets the Canada coast at the northern edge of Karwar district in Karnataka. The most well-known island of Konkan are Ilhas de Goa, the site of the capital city of Panjim, and Salsatal Island on the which Mumbai is situated. Himalaya mountain range are an example of which of the following mountain? Himalaya mountain range को प्रकार माउंटेन रेंज अटे ब्लॉक माउंटेन फोल्ड माउंटेन रेसिडुअल माउंटेन नॉन ऑफ दिस करेक्ट आंसर कौन हम हिमालय माउंटेन रेंज आर एन एग्जांपल ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन करेक्ट आंसर फोल्ड माउंटेन Himalaya mountain are example of fold mountain. A mountain is any natural elevations of the earth's surface. The mountains may be a small summit and a broad base. It is considerable higher than in the surrounding area. Some mountains are even higher than the clouds. Mountains are formed by enormous movement upon the earth crust. These genetic movements fold and break the crust into many layers, and sometimes these movements raise the crust in the upward direction, dome shaped in a result. The changes in crust give rise to different types of mountain. Types of mountain ले प्रथम में देखिए fold mountain. Fold mountain sound होची कूलर साउंड होची बंद कर दो टिके लाइन में ड्रेसटा सुखे तो ड्रेसटा सुखे देलनि कौन फोल्ड माउंटेन्स यंग फोल्ड माउंटेन्स जोटा हूँ हिमालय जोटा हूँ ओल्ड फोल्ड माउंटेन यंग फोल्ड माउंटेन भितर हिमालय ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स भितर जोटा हूँ आपलाचियंस एंड ओराल ब्लॉक माउंटेन्स और फॉल्ट माउंटेन्स आउट हूँ वोल्केनिक माउंटेन Which of the following is not a depositional landform? Alluvial fens, delta, point bars, limestone pavements. क्लास पर सुखे देमी क्लास पर सेटा पिंधिकी जिमी कोचिंग Which of the following is not a depositional landform? Alluvial fens, delta, point bar, limestone pavements. करेक्ट आंसर कौन हम करेक्ट आंसर कौन हम डी limestone pavements. This is because limestone pavements are erosional landforms. A limestone pavement is a flat expanse of exposed limestone formed a combination of chemical weathering and erosion. Alluvial fens are depositional landforms that are formed when streams flowing from higher level break into foot slope plains of low gradient. The load when not carried away from the sea from well sorted clearly stratified low cones. These are delta. They are depositional landform. Point bar, also known as meanders bar, and are found on the convex side of meanders of large rivers and are sediment deposited in a linear fashion by flowing waters along the bank. They are depositional landforms too. The gently sloping accumulation of coarse alluvium deposits by a braided stream is known as this. The gently sloping accumulation of coarse alluvium deposits by braided stream is known as this. Sandbar, alluvial fen, Bajada, Diarus. Correct answer.
करेक्ट आंसर सैंडबार भीतर जीव सैंडबार सैंडबार इज एन एरिया ऑफ सैंड ग्रावेल कोर्स alluvium deposits or fine sediments that is built by waves offshore from the beach. Hence option was sandbar is correct. Alluvial fan jodi kahiba, it is a depositional landform that forms when stream flowing from higher level break into foot slope planes of lower gradient. Hence it is wrong. Bajra, it is an alluvial plains formed at the base of a mountain by combination several alluvial fans. Hence it is a wrong option. Dairas, it is a piece of land that has got created in the middle of river Ganga due to deposition of sand over the decades. Hence it is also wrong. Next question. Where is India's only active volcano barren island located? इंडिया रो केवल एक्टिव वोल्केनो बैरन आइलैंड को जगह देखा जाए? अंडमान आइलैंड, निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड, मिनिकॉय. Where is India's only active volcano barren island located? Correct answer Andaman Nicobar Island. India's only active volcano is located in barren island Andaman Islands. Barren Island, an Indian possession in the Andaman Sea, about 135 km north of Port Blair on the Andaman Island, is the only historical active volcano along the north-south trending volcanic arc that extends between Sumatra and Burma, जोटा कि म्यांमार बोली कहा जाए. The island, 354 meter high, is the emerging summit of a volcano that rises from a depth of about 2250 meter during eruption in the 19th century, and more recently in 1991 and 1995. Lava flows cover most of the caldera floor and have entered the sea along the western coast. Next question. Match list first, second and selectively correct answer from the course given below. Landform देइछि, feature देइछि. लैंडफॉर्म देइछि, लैंडफॉर्म फीचर और लोकेशन मैच करेबो. लैंडफॉर्म फीचर अछि alluvial fans, V shaped valley, delta oxbow lakes. लोकेशन अछि mountainous area, coast, lower reaches of the river, mountain foothills. मैच करेबो कोटा हबो करेक्ट आंसर. फोर वन टू थ्री देखिए करेक्ट आंसर. 4123 हम करेक्ट आंसर. जो alluvial fans रही are formed when stream flowing from mountains break into foot slope plains of low gradient. This stream spreads as a broad low to a high cone shaped deposit called an alluvial fan that appears as a series of continuous fans. Such fans appear throughout the Himalayan foothill in the North Indian plains. जो V shaped valley रही, valleys start as small and narrow rills. These rills will progressively develop into long and wide gills. The V shaped valley is created due to vertical erosion of the river in its upper course in the mountainous area. Delta जो रही तमरा river delta is a low lying plain that occurs at the mouth of a river near where it flows into an ocean or another larger body of water. These are formed near the coastal area. Oxbow lake जो रही at the lower reaches of the rivers when rivers have larger sediment than the volume of water, it starts meandering. Sometimes in absence of enough water, some portions of meandering get separated and that created oxbow lakes. Next question. Tides and surges are the two different types of movement of ocean water. Consider the following statement in the regard. Following co statement ठीक अच्छी कहब. Movement of water caused by the meteorological effect is called surges. The periodical rise and fall of the sea level, mainly due to the attraction of the sun and the moon, is called a tide. Surges are also regular like tides. Which of the above statement is true? 1, 1 and 2, only 2, only 3.
कोटा ठीक करेक्ट आंसर देखिए 1 आउ 2 दुईटा तक ठीक द पीरियडिकल राइज फॉल्स of the sea level once or twice a day mainly due to the attraction of the sun and the moon is called a tide. Both movement of water caused by meteorological effect जोटा कि winds and atmosphere pressure changes are called surges. Surges are not regular like tides. The study of tide is very complex spatially and the temporarily as it has great variation in frequency, magnitude and height. The moon's gravitational pull to a great extent and to a lesser extent the sun's gravitational pull are the major cause for the occurrence of tides. Another factor is the centrifugal force, which is the force that acts to counterbalance the gravity. Next question. Consider the following statement regarding the characteristics of tide generating force. The प्रथम पॉइंट कही the tidal bulges on the wide continental shelves have the greater height. Second रे कही the shape of bays and estuary along a coastline can also magnify the intensity of tides. Third रे कही when tidal bulges hit the mid oceanic island they become low. या भितर कौ स्टेटमेंट ट्रू अच्छी 1 1 2 only 2 1 2 3. 1 2 3 right. Correct answer 1 2 3 तीनटा जाक हबो. The tide generating force is the difference between these two forces. गोटे होची gravitational attraction of the moon and the centrifugal force on the surface of the earth nearest the moon. Pull or the attractive force of the moon is greater than the centrifugal force and so there is a net force causing a bulge towards the moon. On the opposite side of the earth the attractive force is less as it is further away from the moon. The centrifugal force is dominant, hence there is a net force away from the moon. It creates the second bulge away from the moon. On the surface of the earth the horizontal tide generating forces are more important than the vertical forces in generating the tidal bulges. The tidal bulges on the wide continental shelves have a greater height. When tidal bulges hit the mid oceanic island they become low. Next question. Which of the following is not the relevant use of tidal moment? Tidal moment ra relevant use कोटा नुहे. Tidal flows are of great importance in navigation. Tides help in the development of coral reefs. Tides are also helpful in desilting the sediments and in removing polluted water from river estuary. Tides are used to generate electric power. Not the relevant कही या भितर कोटा relevant नुहे. B. Tides help in the development of coral reefs. Correct answer तो देखिए B हबा. Tides are caused by the earth, moon and sun position which are known accurately and hence the tides can be predicated well in advance. This helps the navigators and fishermen plan their activities. Tidal flows are of great importance in navigation. Tidal heights are very important, especially harbors near rivers and within estuaries having shallow bars at the entrance which prevent ships and boats from the entering into the harbor. Tides are also helpful in desilting the sediments and in removing polluted water from river estuary. Tides are used to generate electrical power
especially in Canada, France, Russia and China. Next question, inflation is the state in which dash. Inflation is the state in which inflation कहले कौन बुझ? The value of money decreases, the value of money increases, the value of money increases fast and then decreases, the value of money decreases fast then increases later. Inflation ର meaning कहले कौन बुझ? करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर ए, प्राइस ऑफ करेंसी डिक्रीजेस. प्राइस ऑफ करेंसी एटा नुह कि रो 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 सॉरी हाँ ये हम द प्राइस ऑफ करेंसी डिक्रीजेस बा जोटा आम कहते ऑप्शन नंबर ए हम करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इन्फ्लेशन एफेक्ट्स द प्राइस ऑफ कमोडिटी. प्राइस ऑफ कमोडिटी ऊपर इन्फ्लेशन केमिति कौन प्रभाव पकाए? प्राइस ऑफ कमोडिटी डिक्रीजेस, प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेस, नो इफेक्ट. करेक्ट आंसर कौन हम? How inflation affects the price of the commodity? Price of the commodity decreases, price of the commodity increases, no effect. B number, price of goods are increases है. ऑप्शन नंबर बी हम करेक्ट आंसर. आंसर हम प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेस. जो प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज हम कहीं इंक्रीज हम कहीं ना गुड्स प्राइस टा कौन हुए इनक्रीज हुए. ये एक्सप्लेनेशन लिखाई जे आंसर लिखाई बुझीगला. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कंपेयर द इन्फ्लेशन विथ द रबर्स. इन्फ्लेशन सहित रबर्स को किए कंपेयर करते? ये क्वेश्चन टा प्रायतः प्रीवियस क्लास रे करा जाइथिला. प्रोफेसर केनस, प्रोफेसर जगदीश भगवती, प्रोफेसर ब्रह्मानंद एंड वकील अमर्त्य सेन एंड जेके मेहता. करेक्ट आंसर कौन? हु कंपेयर द इन्फ्लेशन विथ द रबर्स. करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रोफेसर ब्रह्मानंद एंड विकेट हैव कंपेयर द इन्फ्लेशन टू रबर्स. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेजर इज अडॉप्टेड टू रिड्यूस इन्फ्लेशन. एमानक भितरु गोटे इन्फ्लेशन को कमेवा पई कौन करबा को पड़े? रिडक्शन इन बैंक रेट, रिडक्शन इन रेपो रेट, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, कट्स इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग. करेक्ट आंसर कौन हम? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी संगर जीव. रिडक्शन इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर reduces the supply of money in the economy which further reduces inflation है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बेस ईयर फॉर मेजरिंग इन्फ्लेशन एट होलसेल प्राइस इंडेक्स, जोटा कि WPI बोली कहा जाउची, होलसेल प्राइस इंडेक्स इन इंडिया. व्हाट इज द बेस ईयर ऑफ मेजरिंग इन्फ्लेशन WPI इन इंडिया? 2004-05, 2001-02, 2011-12, 2014-15. What is the base year for measuring inflation at a wholesale price index in India? सठिक आंसर, the new base year for measuring inflation 2011-12. Next question, which committee was set up to review the concept of poverty line? या भितर कौ कमिटी को सेटअप करा जाइथिला पॉवर्टी लाइन को रिव्यू करबा पई? सुरेश तेंदुलकर कमिटी, लकड़वाला कमिटी, वांचू कमिटी, दत्त कमिटी. करेक्ट आंसर कौन हम? व्हिच कमिटी वाज सेट अप टू रिव्यू द कांसेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन? सठिक आंसर तमर हम सुरेश तेंदुलकर committee. Suresh Tendulkar committee was constituted to review
the concept of the poverty line in 2005, the committee recommended shifting away from the calories model. The Lakdiwala committee was constituted to consider the methodological and computational aspects of the estimation of the proportion and the number of poor in India. Vanchu committee was constituted to look into industrial development for the backward area and to recommend fiscal and financial incentive for industrial in these area. That committee was constituted to inquiry into the working of the licensing system in India. What are the different types of poverty? What are the different types of poverty? या भितरु कोटा डिफरेंट टाइप रा पॉवर्टी अटे? रिलेटिव पॉवर्टी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, बोथ 1 and 2, नन ऑफ द अबव. करेक्ट आंसर कोन हबो? करेक्ट आंसर बोथ 1 and 2. पॉवर्टी आर ऑफ टू टाइप्स. पॉवर्टी दी प्रकार, गोटे रिलेटिव पॉवर्टी, गोटे एब्सोल्यूट पॉवर्टी. Relative poverty refers to poverty of people in comparison to other people in different region or nations. Relative poverty रे comparison करा जाए. Absolute poverty रे refers to total number of people living below the poverty line. एटा total number of people टाको निया जाए. Absolute रे relative रे कौन करा जाए? Comparison करा जाए. According to the latest report, which state has the highest percentage of people living below the poverty line in India? को स्टेट रे सबुठार अधिक पॉवर्टी अछंती? पॉवर्टी लाइन देखा जाए उत्तराखंड, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़. करेक्ट आंसर कौन हम? अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट रिपोर्ट, व्हिच स्टेट हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ पीपल लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया? सठिक आंसर छत्तीसगढ़, नॉट ओडिशा. ओडिशा को तो कमजोर भावनी. अकॉर्डिंग टू द latest report, Chhattisgarh state has the highest percentage of people living below the poverty line in India. The incidence of poverty in Chhattisgarh is very high. Out of the total population of Chhattisgarh, 23.24% people live in urban region. The estimated poverty ratio in 2004-05 based on uniform reference period consumption was around 50%, which is approximately double the all India level. The capital of Chhattisgarh is Noya Raipur. Next question. क्वेश्चन कही प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जोटा हूँ PMMY is a flagship scheme of the government to fund the unfunded. What is the full form of मुद्रा? मुद्रार फुल फॉर्म कौन अटे पचारि? ये जो मुद्रा एटी कहला ए मुद्रार फुल फॉर्म कौन? मीडियम यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिस्ट्रक्टिंग एजेंसी लिमिटेड, मीडियम यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिस्ट्रक्टिंग एजेंसी लिमिटेड. बहुत सारा पिला बी कहते देखिए माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी. माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी ऑप्शन नंबर बी हम टूटा. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना स्कीम टू फंड द अनफंडेड. द एम ऑफ द स्कीम इज टू ब्रिंग लेस फंडेड एंटरप्राइजेस टू द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम and extending affordable credit to them. The scheme ensures that a small borrower gets credit from the all public sector bank such as PSU bank, private sector bank, regional rural bank, foreign bank, microfinance institute, cooperative bank. PM Modi launched the scheme on 8th April 2015. Any Indian citizen who has a business plan about any income generating activity like manufacturing, processing etc. can get micro unit development refinery agency बा जोटा कि मुद्रा बोली कहा जाए
loan under Pradhan Mantri Mudra Yojana up to 10 lakh. However, it is applicable to business plan of the non-farm sector. Manrega provides legal guarantee for employment at minimum wages to adult members of a household in a financial year for at least days 120 days, 100 days, 90 days, 80 days. Correct answer कौन हम? Correct answer तुम्हारा 100 days संग आसीबो. The primary objective of मनरेगा जोड़ा कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट is to guarantee 100 days of employment in the every financial year to adult members of any rural household willing to do public work related unskilled manual work. Unlike earlier employment guarantee scheme, the act aims at addressing the causes of chronic poverty through a right-based framework. At least one third of beneficiaries have to be women. Wages must be paid according to the statutory minimum wages specified for agricultural laborers in the state under the Minimum Wages Act 1948. The most important part of Manrega design is its legally backed guarantee for any rural adult to get work within 15 days of demanding it, following which an unemployment allowance must be given. Next question: group who regularly move in and out of poverty are termed as always poor, chronic poor, churning poor, transient poor. Correct answer कौन होगा? Groups who regularly move in and out of poverty are termed as always poor, chronic poor, churning poor, transient poor. Correct answer कौन होगा? चर्निंग पोर. करेक्ट आंसर चर्निंग पोर पढ़ीदेव एटा है. नेक्स्ट क्वेश्चन: व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी इज रिलेटेड टू पॉवर्टी एस्टिमेशन इन इंडिया? पॉवर्टी एस्टिमेशन सुरेश तेंदुलकर बोधे. सुरेश तेंदुलकर है. टिके लाइन रुह. क्वेश्चन आसूची कौन तमारा पॉलिटी आ हिस्ट्री. हिस्ट्री ऑफ पॉलिटर क्वेश्चन अच्छे. जस्ट टिके वेट गोटे मिनिट वेट कर. 1 ରୁ 2 मिनिट वेट कर. 1 ରୁ 2 मिनिट क्वेश्चन आसूची है. 1 ରୁ 2 मिनिट क्लास शेष ही नहीं. 1 ରୁ 2 मिनिट वेट कर. बुझीपार तो?
देख द 100th amendment in India Constitution provides that जो 100 नंबर जो अमेंडमेंट रही सेटा कौन प्रोवाइड करूँ प्रोटेक्शन ऑफ लाइवहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग एक्वायरिंग ऑफ टेरिटोरीज बाय इंडिया and transport to certain territories to Bangladesh, emoluments, allowances and privileges to the governors, the reorganization of state of Andhra Pradesh. 100 नंबरटा जो रही सेटा तुम अमेंडमेंट जो रही सेटा कौन 100 नंबर अमेंडमेंट करेक्ट आंसर दे देखा 2 हम एक्वायरिंग ऑफ टेरिटोरीज बाय इंडिया एंड ट्रांसफर ऑफ सर्टन टेरिटोरीज टू बांग्लादेश द 100th अमेंडमेंट इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स एक्वायरिंग ऑफ टेरिटोरी बाय इंडिया एंड ट्रांसफर ऑफ सर्टन टेरिटोरीज टू बांग्लादेश द कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 2015 100th अमेंडमेंट rectified the land boundary agreement between India and Bangladesh. The act amendment the first schedule of the constitution in order to exchange the disputed territories occupied by both the nation in accordance with the 1974 bilateral बा जोटा कि LBA बोली कहा जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन under which act did English get the status of the associated official language? करेक्ट आंसर कौन हम करेक्ट आंसर अंडर व्हिच एक्ट डिड इंग्लिश गेट द स्टेटस ऑफ एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑप्शन नंबर 4 हम ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट आर्टिकल 343 एक्सप्लेनेशन अच्छी ताकू नहीं कि पढ़िबो हला एक्सप्लेनेशन पढ़िया पे टाइम आउ नाही ये सब अच्छी देखियो हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ हरियाणा इन 2019 2019 रे कॉन्स्टिट्यूशनल हेड किए मनोहर लाल खट्टर दुष्यंत चौटाला सत्यदेव नारायण आर्य रणबीर सिंह गंगुआ करेक्ट आंसर कौन हो फटाफट आंसर दियो हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ हरियाणा इन 2019 2019 कॉन्स्टिट्यूशनल हेड किए हरियाणा रा करेक्ट आंसर जो देखिबा सत्यदेव नारायण आर्य हबो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज द हेड ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर constituted on September 25, 2017. Economic Advisory Council to the Prime Minister रा हेड किए असीमा गोयल छाड़ विवेक देब्रय है विवेक देब्रय. नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख Consider the following statement. The Speaker of the Lok Sabha appoints commission under Article 341 of the Constitution of India to investigate the conditions of backward classes. Article 338 A of the Constitution of India deals with the National Commission for Scheduled Tribe. Article 338 of the Constitution of India deals with National Commission for Scheduled Caste. Which of these above statement are correct? जो 4टा स्टेटमेंट देछि जो 3टा स्टेटमेंट से 3टा स्टेटमेंट तो देछि या भीतर करेक्ट कोटा
2 और 3 1 and 3 1 2 1 2 3 तो सठिक आंसर देखिए यार 2 आउ 3 ठीक अच्छी कौटा अच्छी करेक्ट आंसर 2 आउ 3 ठीक अच्छी चला नेक्स्ट क्वेश्चन एटा अच्छी एक्सप्लेनेशन पड़ो द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एन अनसाइटेड द डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन डैश शंकरी प्रसाद केस साजन सिंह केस गोलकनाथ केस केशवानंद भारती केस ये क्वेश्चन बहुत थर कराई तुम एवं वेरी वेरी इंपोर्टेंट भी द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एन अनसाइटेड द डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन डैश करेक्ट आंसर जो देखा केशवानंद भारती केस बहुत थर पॉलिटी पढ़ाला वाला क्वेश्चन कर नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी सीट्स इन द लोकसभा रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब पाई लोकसभा रे केतोटी सीट रिजर्व थाए 47 29 34 17 करेक्ट आंसर कौन हम हाउ मेनी सीट्स इन द लोकसभा रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब मानक पाई लोकसभा रे केतोटी सीट रिजर्व थाए करेक्ट आंसर जो देखिबो करेक्ट आंसर अब तुमर 47 टा सीट तुमर रिजर्व थाए नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट बिलोंग्स टू द स्टेट लिस्ट या भितर स्टेट लिस्ट रे तुमरे कोटा आसे पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली लैंड एंड बिल्डिंग वर्कर्स यूनियन इंडस्ट्रियल एंड लेबर एम्प्लॉयमेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स बिलोंग्स इन स्टेट लिस्ट भितर या भितर कोटा आसे पचारि स्टेट लिस्ट भितर लैंड एंड बिल्डिंग गुड करेक्ट आंसर जो मैंने लैंड एंड बिल्डिंग देच तो ठीक अच्छे स्टेट लिस्ट भितर लैंड एंड बिल्डिंग से आसो नेक्स्ट क्वेश्चन द स्टेट्स वी आर रीऑर्गेनाइज्ड इन द ईयर 1956 मेनली ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच क्राइटेरिया जो स्टेट गुड़ा को रीऑर्गेनाइज करागला 1956 रे कहा ऊपर बेसिस करी करागला एक्सटर्नल एंड इंटरनल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन फैसिलिटी लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल यूनिफॉर्मिटी जियोग्राफिक सिमिलरिटी एंड रिसोर्स एलोकेशन करेक्ट आंसर कौन हम द स्टेट्स वी आर रीऑर्गेनाइज्ड इन द ईयर 1956 मेनली ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच क्राइटेरिया करेक्ट आंसर लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल यूनिफॉर्मिटी लिंग्विस्टिक और कल्चरल यूनिफॉर्मिटी को लेकिन क्राइटेरिया को नहीं कराई है Who has the given the status of constitutional head to the governor general and the governor of the territories यही स्टाटस टा तुम किए देथिला कॉन्स्टिट्यूशनल को गवर्नर जनरल हेड जी गवर्नर टेरिटरीज हेड भी सी रही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट डायरेक्टिव प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट करेक्ट आंसर कौन हम करेक्ट आंसर तमर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट हम कौटा हम इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जोटा कि 1947 आसला द इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा व्हिच मेट इन विजयवाड़ा 1944 तांको ना कौन शाहजनता सरस्वती विनोबा भावे अच्युत राव पटवर्धन नरेंद्र देव द इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल इंडिया किसान सभा व्हिच मेट इन विजयवाड़ा 1944 किए सी करेक्ट आंसर कौन हम शाहजनता सरस्वती नेक्स्ट क्वेश्चन द औध किसान सभा एस्टाब्लिश्ड
The oath Kisan Sabha established in 1920 failed to bring under its wing any Kisan Sabha. Statement 2. The oath Kisan Sabha asked the Kisan to refuse to bill Berkeley land, not to offer hurry and beggar. तो या भितर कोटा ठीक? Both the statement are individually true and statement 2 is the correct explanation of the statement 1. Both statements are individually true but statement 2 is not the correct explanation of statement 1. Statement 1 is true but statement 2 is false. Statement 1 is false but statement 2 is true. Correct answer जो देखिबा option number 4 is statement 1 is false but statement 2 is true. When was the Singh Sabha movement formed in Amritsar? अमृतसर रे केबे सिंह सभा मूवमेंट स्टार्ट होता? 1997, 1830, 1873, 1920. अमृतसर रे केबे सिंह सभा मूवमेंट स्टार्ट होता? करेक्ट आंसर कौन हम? 1873 होता. केबे होता? 1873. Which one of the following statement is the true about Pune Sarvajanika Sabha? It was founded in the year 1868. It was founded by the S.H. Chiplonkar, जोड़ा कि G.V. Joshi and M.G. Ranade. Select the correct answer using the code given below. Only one, only two, both 1 and 2, none of the above. Correct answer जो देखिबो केवल 2 टा ठीक हबो हला. Next question. Which of the following statement is Madras Mahajana Sabha? It was founded by G. Subramaniam Iyer, Anand Tarchu and M. Viragacharya. It was founded in the year 1884. ओटा स्टेटमेंट तो भाबु तो केटा तुम सिलेबस बाहर क्वेश्चन सिलेबस बाहर क्वेश्चन नुहे एटा सिलेबस भीतर अछि ना नहीं ए जो क्वेश्चन ओडा करा होछि कहलो देखिया कमेंट सेक्शन ले. करेक्ट आंसर बोथ 1 and 2. Both 1 and 2 have a correct answer. Both 1 and 2. Next question. Raja Raman Rai was associated with the founding of the which among the following organization? Raja Raman Rai was associated with the founding of the which among the following? Correct answer आत्मीय सभा. आत्मीय सभा. आत्मीय सभा जोटा कि कोलकाता रही 1815 रे. ये टेबुल अच्छी आत्मीय सभा प्लेस को जगह फाउंडर किए? आर्य समाज स्वामी दयानंद. Which of the following founders did founders and organized correctly? Radhakanta Dev, Widow Remarriage Association, Kesava Chandra Sen, Tabernacle of New Dispensation, Anni Besanta, Theosophical Society. 1 and 2, 1 and 3, 2 and 1, 2, 3. करेक्ट आंसर कौन हम? 2 ओनली. 2 टाइक हम है. आगे निजे पढ़द आती रहा निजे पढ़ीदब. हाँ यहाँ कह. Which among the following organization has been founded by Satish Chandra Basu in Bengal? Satish Chandra Basu. Satish Chandra Basu को ऑर्गेनाइजेशन तमारा फाउंड करथिले? अभिनव भारत अनुशीलन समिति, भारत नवजन सभा, स्वदेश बांधव समिति. कौटा हम? करेक्ट आंसर अनुशीलन समिति. करेक्ट आंसर कौन हम? अनुशीलन समिति. आउ बाकी रहा जो 2टा स्टेटमेंट वाला से पढ़ीदब है. पीडीएफ प्रोवाइड हो पुणी देखा काली
अरे ये पीडीएफ टा तुमको प्रोवाइड करा दिबो निजे पढ़ियो ना टिके दीटा गोटे दीटा क्वेश्चन तुम ऊपर छाड़िली हला निजे पढ़ टिके सब बेले सार ऊपर डिपेंड करना सार कौन मरिए ना तुम ना बुझी पारछ ना काली 12टा बेले फुल मॉक टेस्ट रही फुल लेंथ रा बुझीगला 12टा बेले काली फुल मॉक टेस्ट अधा खंडिया नहीं थैंक यू समस्त को पीडीएफ प्रोवाइड हो पढ़ीदेव है ठीक अच्छे बाय।